elixir of life. But humans, they don't care about me. They throw garbage and dump industrial waste into me. Even my friends' fishes are adversely affected. I am a tree. I have helped the mankind, serving them oxygen, gave them food, controlled natural hazards. But what did I got in return? I was burnt, chopped, and turned into furniture and papers. The sand of time have rendered fair. Once blue skies are no longer clear. Oceans sandy white with plastic and crude. All sea life destined to a slow, awful doom. Poisons and insecticides are sprayed on our food. Once fresh water is not fit to consume. Dumpyards are burning with rising fumes. Automobile emits CO2 from fuel. Rivers now littered, brown and drying. Trees burned and cut, roads are lying. But one can't blame the industries alone. As they say, you reap what you have sown. As they say, you reap what you have sown. Human activities from pollution to overpopulation are driving up the earth temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause of phenomena is known as greenhouse effect. Gases in the atmosphere such as water vapor, CO2, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbons let the sun's light in but keep some of the light from escaping like the glass wall of the greenhouse. The more greenhouse gas in the atmosphere, the more heat gets trapped, straightening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities like the burning of fossil fuels have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third. Since the Industrial Revolution, the rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. The atmosphere CO2 has not reached today's level in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, weather, food sources and health. Ice sheets such as Greenland and Antarctica are melting. The extra water that was once held in glacier cause sea level rise and spill out of the ocean, flooding coastal region. Warmer temperature makes weather more extreme. This means not only more intense major storm floods and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather push challenges. Growing crops become difficult. The areas where plants and animals live shifts and water supply are diminished. In addition to creating new agriculture challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles which increase rapidly at higher temperature. Exposure to higher level of smog can cause health problems such as asthma, heart disease and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can change it. If we work to our place fossil fuels, the renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emission, we might still be able to present some of the worst effects of climate change.
रो रो कर पुकार रहा हूँ मैं, मुझे ज़मीं से मत उखाड़ो। जीवों के प्रेम से सींचा गया हूँ मैं, अब मुझे इस कुल्हाड़ी से मत मारो। पूछो उन बादलों से किस तरह मुझे पाला है, उनके प्रेम रूपी जल से मेरा हर कण कण जीवित हो पाया है। मेरे से ही है हर जीवों का नाता, क्योंकि मैं ही हूँ जो हर जीव को ऑक्सीजन दे पाता। मत उखाड़ मुझे ए इंसान, मेरे बिना धरती हो जाएगी वीरान। सूना हो जाएगा धरती का हर कोना कोना। ए इंसान, क्यों चाहता है तू इस प्यारी सी धरती माँ को खोना। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगी, जितना जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए ये पेड़ और पौधे महत्वपूर्ण है। आपसे इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगी, जितना हो सके पेड़ों को सींचिए और इस धरती को हरा भरा और सुंदर बनाइए। जय हिंद, जय भारत। पौधे अच्छे लगते हैं, चाहत से जिसे हम पाल सकें। हो जगह जहाँ फुलवारी की वहाँ बाग लगाना ठीक नहीं। 20 बरस तक और यदि बढ़ता रहा जहान, भारत में हो जाएंगे 1.5 अरब इंसान। 1.5 अरब इंसान भला क्या खाएंगे? कपड़ा, दूध, भोजन बोलो कहाँ से पाएंगे? कमरा, बिस्तर और किचन की शिफ्टें होंगी चालू। घास फूस तक नहीं मिलेगा, दुर्लभ होंगे आलू। 1.5 सेकंड में एक लाल भारत में आता है। लाख 130 बरस में जब बढ़ जाता है, यो बढ़ जाता है जैसे टिड्डी दल आता है। जनसंख्या वृद्धि से खतरा चीनी आक्रमण के खतरे से कहीं अधिक है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ लाइनें कही थी, वो मैं आप सबको कहना चाहूँगी। यदि हमें अपने भविष्य सुरक्षित रखना है और सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करनी है, तो देश की आबादी को सीमित और सुरक्षित रखना हमारा परम आवश्यक है।
COVID crisis, everyone is ready to give his or her lifetime income for oxygen to save their loved ones. This shows the importance and need of oxygen in our life. You might hearing oxygen, oxygen, where is oxygen? Right? Why it is so? Why we are depleting oxygen day by day? Our atmosphere is full of 21.9% oxygen, friends. But still, we have to buy cylinder for oxygen. It's a thing, it's a point to be noted and work upon it, my dear friends. We are having less oxygen in the environment. Our lungs are not getting oxygen. My friends, this is all due to human activity and environmental exploitation. Point to be noted, my dear friends. We need to work upon it. We need to do something. जो ब्रिक है वो एक नॉर्मल ब्रिक से 4 गुना ज्यादा मजबूत है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से मटेरियल से बनी है? ये ब्रिक बनी है आपके इस मास्क से। हियर्स द फुल स्टोरी। कोरोना के बाद एक और क्राइसिस हमारी राह देख रहा है और वो है यूज्ड मास्क, पीपीई किट्स और ग्लव्स के कचरे का क्राइसिस। आपने ये नजारा तो देखा ही होगा। साइक्लोन ने कुछ ही दिनों पहले हमारे ओशंस में डाला हुआ सारा कचरा, सारा प्लास्टिक हमें वापस दे दिया।
प्रकृति के ये अनमोल नज़ारे लगते हैं मुझे बेहद ही प्यारे। देखकर इनको खिल उठता है मेरा मन, हो जाते हैं इसके तो वारे न्यारे। प्रकृति के ये अनमोल नज़ारे, इन पर ना जाने कितनों ने दिल हारे, पर हैं इनके कम ही कदरदान, और ये तो जीते हैं उनके ही सहारे। प्रकृति के ये अनमोल नज़ारे लगते हैं बड़े सुंदर सारे के सारे, पर हो रहा है इनका भी खस्ता हाल, है ये भी अब प्रदूषण के मारे। प्रकृति के ये अनमोल नज़ारे ले लेते हैं सभी दुख हमारे, फिर भी परेशान करते हैं हम इन्हें, क्यों नहीं कहते इनसे कि हम साथ हैं तुम्हारे, कि हम साथ हैं तुम्हारे। सेव नेचर, save future. Trees covers 30% of the planet. 26 trees make up a 1 ton of paper. 7 billion people call it home. Human beings are the main threat to the environment, and the major problems that affect our environment are the climate change, global warming, factory fossil fuel combustion, and according to a report from the International Energy Agency, by 2040 there are likely to be about 9 lakh premature deaths in the country due to the drastic rise in air pollution in the country. 47 species of the plants and animals in India are listed as critically endangered. Lack of safe garbage disposal systems in the country make India one of the most unhygienic countries in the world. Plastics are one of the least biodegradable materials. India is the third largest emitter of the carbon dioxide. Depletion of the crucial ozone layer of the atmosphere is attributed to pollution caused by the chlorine and bromide found in the chlorofluorocarbons. Now here is the list of the countries by the CO2 emission. Acid rain occurs due to the presence of the certain pollutants in the atmosphere. Genetic modification of food results in increased toxins and disease, as genes from an allergic plant can transfer to target plant. Now it's us who need to initiate against this. How should we solve the problem? Let's see the solutions. Solar power is a fantastic solution, and wind power is coming into play. Combustible solid waste should be burnt in incinerators, and recycling of the wastes and sewage should be done. And legislation against pollution should be strictly implemented. Scientific, administrative and social measures must be adopted by using the cloth bag and not burning the plastic. Using the CNG instead of the fossil fuels. By using the public transport instead of using their own vehicles. And there should be specific standards for the use of the agricultural chemicals such as insecticides, pesticides and fertilizers. Deforestation must be legally checked. Now let's encourage everyone to follow these solutions.
घुल जाए। हवा में चाशनी है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे।